Somebody asked me the other day, what do you do for a living? I said, I travel. The other guy got confused and said, no, how do you make money? To which I replied, for that I work. Good morning YouTube, good morning all. And yes, I am back after 2 years almost. There have been reasons why I was not uploading, and I'll explain that in a bit. But welcome back to my YouTube channel, VDiaries. This is all traffic that I'm going through, and I'm right now heading to Dhanushkodi. On a solo expedition all by myself from Pune, starting today, 18th December. It's 7:21 in the morning. I just left home, so I was not expecting this traffic actually, but yeah, it's there. The end destination is Dhanushkodi. It's a beautiful place situated in the coastal part of Tamil Nadu. And उससे just पहले रामेश्वरम है. Most of you people must recognize that, may recognize that. और total I guess it's I think 1500 odd kilometers का journey है. Obviously एक दिन में मैं complete नहीं करने वाला हूँ. So it might take 2 days or 2.5 days to reach रामेश्वरम, because वहाँ पे actually stay होने वाला है मेरा. And ये संडे के दिन इतने लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? हैं? कौन है ये लोग? कहाँ जा रहे हैं? Oh my God! Shish! Shit, traffic, man. Oh my God. There's a bus who caught fire. Fuck. Horrible situations, man. So we have to take this detour because ये पूरा जाम था, around 4-5 kilometers का. Sound horn. Sound okay horn. Cool. Vittal Kamat. I usually prefer this franchise just because the standard that they have set, and you don't find any fuzzy things over here, plus the washrooms are clean. So anybody who is traveling to nearby places, mostly on highways from Pune, Vittal Kamat is the place I would recommend. Not an ad. Hashtag. Roads were horrible. Maharashtra government, seriously, highest paid tax paying state probably, but roads are pathetic. अभी कर्नाटका एंटर करूँगा in another 100 kilometers probably, क्योंकि अभी कोल्हापुर आना बाकी है. So I have done roughly around 200 odd kilometers and still around 550 kilometers to go to reach Tumkur, which is I'm thinking to take a first fault at, क्योंकि स्ट्रेच करने में कुछ ये फ़ायदा नहीं है. और दिस इज़ माई फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप आफ्टर like 2 years. So I don't know बॉडी क्या जवाब देगी. Only way to find out is to reach as far as I can. Pretty hungry. Let's munch on some South Indian food, and then we'll head out to Kolhapur. So this is the first toll in Karnataka,
and this has very fond memories for me because ever since I started riding, I think it was my first solo ride on my Bajaj Avenger. मैं अपने रोने शुरू करता हूँ. So yeah, the reason why I was not uploading anything on YouTube because as I already mentioned, I had my big ride planned in February 2020, which is the time COVID hit hard, and I had a plan to go to Kanyakumari, and while coming back I was supposed to explore the entire Kerala, and the thing happened like COVID started from Kerala, so I had to cancel my trip, and since then I was just not getting that momentum to go out, make videos, ride, make trips, even though I have been to a couple of short rides, but and I have recorded content as well, but as I told you, I just was not in a mood. वो जो एक होता है ना कि जाके बैठ के एडिट करो, अपलोड करो, वो पार्ट कहीं पे थोड़ा सा आलसी हो रहा था मेरे में, एंड कुछ चीज़ें भी हुई लाइक कोविड 2 times लॉकडाउन हो गया. दिस इज़ द फर्स्ट लॉन्ग लीव दैट आई गॉट, एंड हियर आई एम ऑन द रोड मेकिंग कंटेंट व्हिच आई लाइक टू डू मोस्ट. Alright, I just had my lunch here. I was in search for a slightly better restaurant, but I was hungry and it was already 3 o'clock. Glad they had the food prepared. That way I'd save some time. Still 300 kilometers to go. Sub 300. I hope journey will be quick enough because 10 kilometers back I was feeling really sleepy. Whew. Inches later. Okay, small update, not so very good news. My bike has broken down. I think battery का कुछ तो issue है. So all was going good. 5:30 में यहाँ पे पेट्रोल भरवाने आया था और पेट्रोल भरवा के आगे जाता हूँ तो गाड़ी शुरू नहीं हो रही है. So I called Bajaj roadside assistance. उसने मेरा 1 घंटा खाया. वो टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं है, वो 100 किलोमीटर दूर है. सो आई एम जस्ट बिफोर चित्रदुर्ग करके यहाँ पे एक टाउन है, वहाँ से 10-15 किलोमीटर की दूरी पे हूँ मैं. और आज संडे है तो सारे सर्विस सेंटर्स भी बंद है. सो दैट्स द अपडेट आई गॉट. तो फाइनल रिजॉर्ट ये निकला है कि वो टोइंग वैन भेज रहे हैं. थैंक गॉड आई टुक रोड साइड असिस्टेंस. अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो दैट्स द ओनली रीज़न आई ट्रैवल इन डे टाइम. और रोड साइड असिस्टेंस लेना
अभी मुझे इतना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है ना, आई कैनॉट एक्सप्रेस, बिकॉज ट्रैवलिंग अलोन इन अ टेरियन विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ। कर्नाटका में मैं किसी को नहीं जानता हूँ, ये चित्रदुर्ग नाम भी फर्स्ट टाइम सुना है मैंने। तो वहाँ पे होटल्स एक दो जगह कॉल किया, एक पूरा होटल बुक है, सेकंड जगह कॉल किया, ही इज़ नॉट पिकिंग अप, थर्ड यहाँ पे फ़ोन लग नहीं रहा है। सो फाइनली आई एम टेकिंग अ चांस। एक रवि मयूर इंटरनेशनल करके, इंटरनेशनल कुछ नहीं, गूगल्स पे रिव्यूज़ कॉल है उसके, तो वहाँ पे फ़ोन तो नहीं लगा है, बट इट्स ऑन द हाईवे, और उसके आसपास एक दो जगह है रहने के लिए जगह। तो अगर वहाँ पे रूम्स नहीं अवेलेबल रहेंगे, सो व्हाट आई प्रॉब्ली डू इज़ आई पार्क माई बाइक ओवर देयर एंड फाइंड समवेयर एल्स, क्योंकि आज रात तो कैसे ना कैसे निकालनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि सर्विस सेंटर कल सुबह खुलेगा, आई डोंट नो कब, 10 साढ़े 10 बजे। आई एम नॉट श्योर वहाँ पे डोमिनर सर्विस होती है या नहीं। उसके गूगल के पिक्स में तो दिख रहा है कि डोमिनर है उसके शोरूम में। होपफुली उसका अगर चार्जिंग यूनिट ख़राब हो गया है या फिर बैटरी ख़राब हो गई है, इन ईदर वे आई विल हैव टू वेट टिल द बाइक गेट्स रिपेयर्ड कल। तो आज का मेरा पूरा पोपट हो गया। आई वाज सपोज टू बी इन टुमकुर एट 8 o'clock, अभी बजे है 7:15। अभी भी यहाँ से टुमकुर कुछ तो 135 किलोमीटर्स है, सो वहाँ पे जाना तो बनता नहीं है। तो चित्रदुर्ग में रुकूंगा आज, कल सुबह आई विल गो टू द शोरूम, आई विल सी क्या हो सकता है। इफ़ माई बाइक गेट्स रिपेयर्ड, नथिंग लाइक इट, नहीं है तो आई थिंक देयर इज़ वन मोर शोरूम प्रेजेंट विद इन चित्रदुर्ग, वहाँ पे ट्राई करेंगे। ट्रैवलिंग सोलो, it has its own perks and disadvantages as well. सेकेंड साइड देख ली इस बार, होपफुली अपना रेड बुल ठीक हो जाए कल, देन विल हेड टू, आई थिंक कल मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा। टुडे आई कंप्लीटेड अराउंड 600+ किलोमीटर्स, काफ़ी मैं चला चुका हूँ। माई बॉडी इज़ नॉट एकिंग, बट प्रॉब्ली कल जवाब दे दे, इसलिए कल मैं भी मदुरई या फिर सेलम में, मोस्टली मदुरई में ट्राई करूँगा, या फिर तिरुचिरापल्ली, वहाँ पे स्टे मारूँगा, और देन आई विल हेड आउट टू रामेश्वरम ऑन ट्यूसडे, बिकॉज टुडे इज़ संडे। हो मोरी मैया, देखते क्या होता है, विश मी लक। 8:01 p.m. टोइंग वाला बंदा अभी तक आया नहीं है। ही सेड 45 मिनट्स, ऑलरेडी 45 मिनट्स हो चुके हैं उसके। ट्राई कर रहा हूँ उसको फ़ोन लगाने का, ही इज़ नॉट पिकिंग अप द कॉल। लेट्स सी। इट्स 8:30, 1 hour past the last update I gave you. That towing guy is still not here. Language barrier, because that guy doesn't understand Hindi. So at least I'm getting some help from this petrol station guys. तो थोड़ा सा वो लैंग्वेज बैरियर थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन it's getting on my nerves now. 8:30, I don't know when I'll reach. I'll have to go there, book a room, because उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। Hectic. This day has started good, but my god, let's see. I'll keep you guys posted once I'll reach hotel, then probably I'll record something. Not in a mood now. Bye. Eventually. Okay, I have reached the hotel. This is exactly precisely the room sizes. That's it. And thank god they have attached washroom. But I managed to get this. It's on the service road, NH4. It's very cheap, $450. I just want a place to crash on, and that's all my luggage. And that's my helmet. God, I got the room finally, because there was a person who came next to me. To whom the reception guy told that the rooms are full. Otherwise, I would have had to park my bike here and find a place to stay somewhere else. God is great, one way or the other. I don't know if the technician is going to come here or मुझे वहाँ जाना है, लेकिन कल जल्द से जल्द बाइक ठीक करा के I'll have to leave. कल
आई डोंट नो कहाँ पहुँचूँगा मैं, शायद मदुरई. इट्स 11 hours 12 hours 600 kilometers to be precise. नहीं जमा तो फिर आई मेक अ स्टे लिटिल अर्ली, और इफ स्टैमिना स्टेज देन थोड़ा आगे जाके रुकूंगा. बट मदुरई, फ्रॉम मदुरई धनुषकोडी इज लाइक half day journey, 3-4 hours, that's it. Okay, I'm very tired of riding, tired of waiting. Good night, see you tomorrow, bye. I have always wondered why birds choose to stay in the same place when they can fly anywhere on earth. And then I asked myself the same question. The question that I was probably avoiding for so long, but not anymore. Finally, I have realized that you don't need a magic to disappear. All you need is a destination and a great ride. Because as they say, dare to live a life that you have always wanted.